Good morning, sir. Good morning to all. Let's just start with the curriculum. We are going to start up with the class today. The first unit is computer organization. It's the basic things related to computers. What all basic things are there in computer system, right? It's what input we have, what output we have, right? You may have done all these things in your previous classes also, but we'll go through each and everything in detail, right? So let's start. First thing, I'll just share the book with you people. Book se yaad aaya, I'll also share this book to you people in the groups. So kindly go through the book, right? And book की printing अभी मत कराना, because see the book is not available in the market because it's a CBSE publication book, which the CBSE has stopped the printing of such books, right? उन्होंने सिर्फ PDF दिया है. PDF I'll share with you, but printing मत करना अभी, because CBSE has not given the clarification on whether there is a change in the curriculum or syllabus or not, right? So we have to wait for that. बाकी मेन सब्जेक्ट्स में चेंजेस क्या क्या हैं करिकुलम में, वो सब आ गया है, बट आईटी का जो है स्किल सब्जेक्ट्स का नहीं आया है. तो बुक पीडीएफ से आप रीड करो कुछ दिन, और whenever I receive some whenever we receive it from the CBSE, that the curriculum and all, so then we can get the printing done, right? So let's start with the curriculum. Today we'll start with the first unit, which is computer organization. Now, in this unit, we are going to study four different things. First is what are the fundamentals of computers, then what components we have in the computer system, and then we'll talk about operating systems, and then lastly how to troubleshoot. Troubleshooting matlab, in case you find some problem on the computers, how will you handle that problem, right? बहुत important है troubleshooting, right? So let's start with the session one, that is fundamentals of computer. So we see computers are a part of each and every area if we talk about nowadays. So applications अगर हम बात करें, computers applications are there in all sort of electronic devices that you find today, even TV, washing machine, watches, mobile phones, the list is endless, right? So all these computers, all these devices nowadays, they are embedded devices. Embedded का मतलब होता है जिसके अंदर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी भी है, प्लस उनका इंटरनल, जैसे इफ यू टॉक अबाउट वॉशिंग मशीन्स, तो वॉशिंग मशीन्स में वी हैव सर्टेन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आल्सो, जिससे कि टाइमर सेटिंग्स एंड ऑल दोस सेटिंग, digital display system, right? Such kind of thing are there, right? So some things are computer based, and rest is all about what washing machine does, right? So इनको हम embedded machines बोलते हैं. So you may see that in all the devices which are used in households are all embedded nowadays. So that means the computing technology has changed the entire scenario, entire world nowadays. So it's a basic part of our life now. So we should know how these computers basically work, and what are the basic techniques used by computers in doing whatever we want to make it from the systems, right? So so today we'll start with that, right? Just take 1 minute so that I'll take up the attendance again, because some more students have joined. Fine. Fine. So first of all, we'll talk about evolutions of computers. Computer की evolution कैसे हुई, right? If we talk about computing devices, पहले तो term computer का मतलब क्या है?
Computer is derived from a term named as compute. Compute का मतलब है calculate करना, to find out, to calculate certain things, right? All computers, they have simple scenario, simple common working scenario. Every computer takes input from the user, they process the input, and they gives you the output. This is the basic structure of each and every computing device. Manjot, I have just told that the book is published by CPSE, and I'll be sharing with the PDF of this book. So, as I requested earlier, also that you should not get it printed, use that in PDF also, because we have not updated with the syllabus of IT from the CPSE yet. जैसे ही हमारे पास CBSE का कोई updated syllabus आता है, अगर नहीं भी change आया, then I'll also let you know. So kindly refer the book in PDF only, right? अभी printing मत कराना. Fine. Okay, so look, continuing it. So computers are the devices which calculate certain things. They takes the input from the user, they process it, and then they gives you an output, right? So all these devices, all these computers, I can say, they work on the set of instructions also. अब computers में हम दो चीजें देते हैं. हर यूजर कंप्यूटर में एक तो वो इनपुट करता है, इनपुट मतलब वो डेटा प्रोवाइड करता है कि क्या करना है, किस पे आपको वर्कआउट करना है. दूसरा होता है इंस्ट्रक्शंस देने कि भाई अगर वो डेटा को यूज करना है तो उसको कैसे यूज करना है, राइट. टू थिंग्स आर सेंट टू द सीपीयू. वन इज द डेटा फॉर प्रोसेसिंग, जिसको हम इनपुट भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज द इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव हाउ टू वर्क ऑन दैट डेटा, राइट. सो बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा. प्रोसेसिंग करना मतलब उसको यूजफुल चीज में कन्वर्ट करना, ठीक है. जो भी आपका डिजायर्ड आउटपुट चाहते हो आप, यू गिव योर इंस्ट्रक्शंस एज पर योर डिजायर्स. सो कंप्यूटर वर्क्स ऑन दोज इंस्ट्रक्शंस, इट वर्क्स ऑन दैट डेटा, एंड देन फाइनली गिव्स यू एन आउटपुट, राइट, द थिंग्स दैट यू वांट, राइट. तो ये तो हो गया कंप्यूटर का प्रोसेस करने का तरीका, राइट. नाउ since computer is an electronic device, right, it works on electronic signals, right, and we all know that computers works on binary language, which is also called as machine language. ये machine language है क्या? Machine language or binary language is a kind of language which is in the form of zeros and ones, right. जिसमें मतलब जो इंस्ट्रक्शंस आपने कंप्यूटर्स को देना है, those instructions are written in combination of zeros and one. For example, if you want to write a sentence, so for every sentence, for every word, for every letter, there's a binary code, right. So we have to provide that binary code to the computer. Then computer works on the binary code, it understands the binary code, then it start working according to the instructions we give in binary form, right. So this is the working. Now one question from my side here is, why only 0 and 1 is used? A very important question. Why 0 and 1, only these two digits are used? Anybody who knows the answer? कि 0 और 1 ही क्यों यूज होता है बाइनरी लैंग्वेज में? हम 2 3 4 5 भी यूज कर सकते हैं. व्हाई इट इज ओनली 0 and 1? एनीबडी, कोई है, किसी को पता है इस चीज के बारे में? नो रिस्पॉन्स. चलो, आई विल टेल यू. सी, सिंस कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनमें दो ही स्टेट्स होती हैं. अगर हम फैन की बात करें, the fan can be switched on or it can be switched off. If you talk about a tube light, you can either switch on the tube light, you can either switch off the tube light. दो ही conditions होती हैं हर electronics devices में, on and off. So the same thing is 0 and 1. 1 represents the on state and 0 represents the off state. ठीक है. 1 का मतलब है ऑन स्टेट और 0 का मतलब है ऑफ स्टेट. इसीलिए 0 और 1 दो ही डिजिट्स यूज होते हैं, ठीक है.
So that's the basic thing behind binary language, right? So this is how computer works. So all instructions are to be given in binary language, and then computer understand that binary language. This was the scenario when we talk about आज से 60-70 years पहले जब नए नए कंप्यूटर्स आए थे, उस टाइम पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी वो बाइनरी लैंग्वेज में ही दी जाती थी. अर्लियर कंप्यूटर्स एक्सपर्ट्स यूज्ड टू गिव all the instructions in binary form only. The 0101 के codes बना के they feed into the system, and then the computer understand those codes and then start working. This was the scenario. But the thing is कि binary language को use करना या उसको handle करना, it is difficult for us to handle that because we don't it's difficult for us to remember those codes, या उसको form करने में बहुत time लगता था, right? So then what happens that year by year new languages came into existence, which was simple English like language where certain terms in English were used, right? So इनको हम बोलते हैं high level language, right? So high level language exist होनी शुरू हुई. The people started making high level languages. Now there's one problem, that computer cannot understand a high level language, because high level language is written in English or some regional language like Hindi or so, and other languages, Chinese and all. So ये English और Hindi और ये सब languages computer की नहीं है. Computer cannot understand that, right? So although we started with this, but we also started with certain softwares which could convert your English like language into binary form. ठीक है, तो हमने साथ में एक सॉफ्टवेयर भी बनाए जो इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस को या हाई लेवल लैंग्वेजेस को बाइनरी में कन्वर्ट कर दे, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, राइट? तो दिस इज द करंट सिनेरियो. आजकल हम लोग ये करते हैं, हम जो इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वी ऑलवेज मेक देम इन हाई लेवल लैंग्वेजेस, राइट? Examples of high level languages are C, C++, Java, Python, JavaScript, MySQL. जितने भी हम लोग करेंगे, हमारे हमारे करिकुलम में भी हैं. देयर आर टू लैंग्वेजेस, MySQL एंड Java. So these are high level languages. We type the things in English words. There are certain English words which we can use to represent the instructions, right? But the if you talk about the वर्किंग क्या है कि हम जो इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश फॉर्म में लिखते हैं, वो दैट इंस्ट्रक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सॉफ्टवेयर्स. उन सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स. दो तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, दोनों कन्वर्जन करते हैं, so that computer understands the binary form of the language and then it starts working accordingly, right? Now these things are easier for us because high level language में इंग्लिश में लिखना हमारे लिए इजी है, बाइनरी कोड्स में लिखना हमारे लिए डिफिकल्ट है, राइट? सो these translators are very translators वो है वो सॉफ्टवेयर जो कन्वर्ट करते हैं, they convert the high level language into a binary language, right? These are called as translators. So compiler and interpreter and assembler, there are three translators available, right? So compiler, interpreter, assembler, ये तीनों है क्या, तीनों में डिफरेंस क्या है? There is one before I come into this point, I'll just explain one more thing कि बाइनरी लैंग्वेज के बाद में there is one more language called as assembly language, quite widely used nowadays also. The assembly language में instead of using complete English words, we use certain fixed words called as mnemonics. एक छोटे छोटे words होते थे, वो भी English like words हैं, but that are not completely based on English like words. We use digital numbers also along with that. So assembly language में हम छोटे छोटे predefined words जो English form के हैं, तो मतलब आप कह सकते हो कि assembly language is a mix up of low level and high level languages, right? So अगर हम assembly language यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स पे, then we need a special kind of translator software called as assembler to convert that assembly language into binary form so that computer can understand. और अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन एंड ऑल, देन वी नीड अ कंपाइलर और वी नीड ए ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर टू
कन्वर्ट दैट थिंग। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है तो कंपाइलर इंटरप्रेटर यूज होगा, अगर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है तो असेंबलर यूज होगा। ठीक है, अब ये कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपाइलर कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इन वन गो, वो जो भी प्रोग्राम है पूरे उसमें अगर 100 इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो 100 के 100 इंस्ट्रक्शंस को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। और जो इंटरप्रेटर है इट कन्वर्ट्स द थिंग लाइन बाय लाइन, right? It converts the thing from first line, it starts from the first line, then it goes to the next line, it goes to the third line, वो लाइन बाय लाइन चलता है। कंपाइलर एक साथ सारा का सारा कन्वर्ट करता है। कंपाइलर फास्ट है, इंटरप्रेटर स्लो है, बट कंपाइलर इज मोर एक्यूरेट देन सॉरी इंटरप्रेटर इज मोर एक्यूरेट देन कंपाइलर, बिकॉज इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। कंपाइलर एक साथ करता है तो उसकी एक्यूरेसी कम है, राइट? One question from my side to you, which one would be better? Compiler better है या interpreter better है? कौन बताएगा? Compiler is fast, interpreter is slow. Compiler, interpreter has more accuracy. Compiler has less accuracy. So which one would be better? Harjab Singh, stop using pens, annotations मैं disable ही कर देना। कोई बता सकता है भाई कि भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर में से कौन सा बेटर है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर बेटर है। इंटरप्रेटर बेटर है वो क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर चेकिंग करता है ना, एरर्स के चांसेस कम है। बट अगर मुझे प्रोसेस करना है एक प्रोग्राम फटाफट, आई वांट क्विक आंसर, फिर क्या करेंगे? फिर इंटरप्रेटर यूज करेंगे या कंपाइलर यूज करेंगे? कंपाइलर। फिर कंपाइलर यूज करेंगे। Okay, so now how will you decide this? This is not decided. So what happens is nowadays in the current computers, in the current computing languages, we use both of them together. ठीक है? If a CPU needs a quick answer, compiler can be used. If a CPU needs thorough answer without any error, your interpreter is used, right? So हम लोग दोनों combinations के साथ चलते हैं। Fine. Chalo, so this is all brief about how languages are used. So because languages are very important, we have to handle 2 languages in our curriculum. So you should know about these things. A compiler interpreter का use जब हम जावा करेंगे या SQL करेंगे ना, MySQL, उस तब फिर से आएगा, क्योंकि वहां पे हमें ये पता होना चाहिए कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करता है, राइट? सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे देयर, right? So then we have 2 terms, hardware as well as software. What are these 2? You must be knowing. Hardware क्या है? Anybody? What is hardware? That we can touch. Anything that we can touch and feel. yes, that the things that we can touch and feel, जिसको हम tangible बोलते हैं। tangible वही होता है जो touch और feel कर सकते हैं। So the hardware are those devices, we can say, which we can touch and feel, the components of the computers that we can touch and feel. For example, keyboard, mouse, monitor, ये सब hardware है, right? या CPU के अंदर जितने components हैं, all are hardware, right? Software क्या है? Softwares are set of instructions, right? And they are intangible, right? Softwares are set of instructions and they are intangible. Intangible means you cannot touch them, right? क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है व्हाट आर सॉफ्टवेयर, तो हम लोग जनरली गलती पता क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं सॉफ्टवेयर इज ए थिंग विच वी कैन नॉट टच, इतना लिख के छोड़ दिया। दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। हमें ये बताना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली होता क्या है। यू हैव टू राइट softwares are
set of instructions. Softwares क्या है? Instructions का set है. Okay, the instruction set that we give to the computer, these are softwares. Fine. अब मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड अप करता हूँ कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप, उनको हम बोलते हैं प्रोग्राम्स. A program is a set of instructions, and when we combine many programs, or we can say when we are dealing with set of programs, that is called as a software. So software comprises a number of programs where one or these programs, they have a number of instructions inside them. So we write instructions in a program, and when we combine or relate many programs with each other, we call it as a software. एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स में हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं. ठीक है, तो प्रोग्राम्स का भी इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. राइट. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स? एग्जांपल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, वर्ड प्रोसेसर्स आ गए. वर्ड प्रोसेसर्स आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट एंड ऑल दोस, स्प्रेडशीट्स, एक्सेल, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स और इवन ऑफलाइन कैलकुलेटर्स जो आप कंप्यूटर्स पे ओपन करते हो, कैलकुलेटर, वो भी एक सॉफ्टवेयर है. राइट. और जितने ऊपर हमने किए थे हाई लेवल लैंग्वेजेस, उनमें भी सॉफ्टवेयर बनते हैं जो हम खुद बनाते हैं, यूजर डिफाइंड. फाइन. और द गेम्स दैट यू प्ले ऑन कंप्यूटर्स, दे आर आल्सो एप्लीकेशंस, दे आर आल्सो सॉफ्टवेयर्स. फाइन. एंड वट एवर एप्लीकेशन, जैसे आपने गाना सुनना है तो आप VLC प्लेयर ओपन करते हैं या विंडोज मीडिया प्लेयर ओपन करते हो, दीज आर सॉफ्टवेयर्स. ओके. So if you talk about how these softwares are working, इनके बैकग्राउंड में इनके अंदर प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, इनके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं कि अगर ये बटन प्रेस किया तो ये होगा, ये बटन पे गए तो ये होगा, if you go to this instruction this will happen. So these instructions are already written, programs are already made. ठीक है, वो अलग बात है, हमें ये दिखते नहीं है क्योंकि वो बैकग्राउंड में होता है. जब इंस्टॉलेशन फाइल्स को चेक करोगे वहां पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेगी. ठीक है, तो they are not visible to us. Right. So clear to all what are hardware, what is software? Yes, sir. Right. So let's move further. We have one more important thing, terms in will should say, what is data? Right. Instructions we have already done, and इनपुट के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत बात किया है, एंड आउटपुट क्या है. राइट. देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है, मैं आपको एक डायग्राम भी बना के दूंगा बाद में, so I'll send you that diagram also. So that diagram is how computer works. What is the basic structure of computers? That computers may data and instructions both are sent to the computer machine for working. So these two are input. Right. Computer reads the instructions, work on the data, and gives us an answer, a result. This result is called as output. Right. The result is produced after processing. Once the data is processed, process का मतलब ये डेटा को प्रोसेस करके उसमें मीनिंगफुल चीजें ऐड करनी ताकि हमारे पास एक रिजल्ट, एक आउटपुट आए. ठीक है, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दिस मस्ट बी क्लियर विद यू. Characteristics, what are the different characteristics of a computer? You might have done this in previous classes. I'll just go through it once. Speed, we know that computers have a very high speed. They can process the data or instructions in a very high speed. How the speed is measured? Speed is measured with a unit called as MIPS, millions of instructions per second. Right? Millions of instructions per second. So for example, the speed of the computer, if you say it is 3 MIPS, मतलब कि वो 3 million instructions एक second में process कर सकता है. Right? So the speed of the systems or computers, we can say that is very high. Another important unit for measuring the speed is also baud. Right?
different form of speed with which information can be sent to and from a computer, right? एक तो MIPS है, millions of instructions per second, or BIPS is also there, billions of instructions per second. And there's one more unit called as baud. Baud is used when we want to find out the difference in speed of transmitting information को transmit करने में जो speed है उसका difference निकालना हो तब हम baud use करते हैं. तो both are used basically. MIPS and baud, these two are the units for measuring the speed. So computers are very high speed devices. Secondly, computers are versatile machines, means they can do variety of jobs with very easily, right? With ease. Fine. So like you can do multiple jobs on one computer. Like if you can also compute certain, you can do some word processing work, like if you're typing something, right? You can also create spreadsheets for calculations. You can also listen to songs. You can also watch movies. So variety of things can be done on one computer. Right? That is why we call a machine as a computer is a versatile machine. Accuracy, computers are 100% accurate, right? The precision is very high, they're very accurate. Precision high का मतलब है कि उनकी accuracy level जो है वो बहुत 100% है, nearly 100%, right? They cannot go wrong. But still sometimes we get wrong output. कई बार एरर्स आते हैं. वो एरर्स क्यों आते हैं? वो एरर्स इसलिए आते हैं कि हमने जो इनपुट किया है या हमने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसमें गई गलती है, right? The instructions that we give or the data that we give, that is wrong. If that is wrong, we'll get a wrong output. Otherwise computer does not give you any error from itself, right? So this phenomena is also called as garbage in, garbage out. Okay, so this phenomena is called as garbage in, garbage out. Garbage in means if you send wrong data, if you send wrong instructions, you will get wrong output. Okay, fine. So let's end up here because it's the time for your next class. So kindly go through the things once, study the things from the book. I'm sharing this book right now after the class. And still, if you need help, if you want anything to be cleared, you can talk to me anytime, right? Chalo, goodbye then. Take care, enjoy, and do read it. Fine. Okay.